You are studying about the percentage share of GDP. मैम आप जो कल क्वेश्चन लिखे मैम Percentage share is changing. मैम 50% प्राइमरी सेकेंडरी 27% एंड टर्सरी सेक्टर 58%. ये तुम्हारे लेसन में भी लिखा हुआ है. यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में इसका कितना परसेंटेज शेयर है? व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी इन एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज शेयर ऑफ secondary, percentage share of tertiary in employment. So 74% was the share during year 72-73 for the primary sector. Only 11% was the share for secondary and 15% was the share for tertiary in employment. Okay, in the field of employment. And how it has changed? What is the data given in your book? Ma'am, 49%. Ma'am, tertiary sector has increased. Ma'am, tertiary and most employment opportunities are in primary sector now. Primary sector percentage share of employment in primary sector has decreased. So, what is the percentage share in primary sector? Ma'am, 49%. 49%. In year 11-12. Any other data is given in your book? No, ma'am. Oh, okay. And 24% is the share for secondary sector. Ma'am, 2017 to 18 primary sector का है 44%. कौन से ईयर का बताओ? Ma'am, 2017 to 18 का प्राइमरी सेक्टर का है 44%. हाँ, तो अब यही फॉलो करना है ना, 2017-18 का ही फॉलो करना. तो फिर टर्शरी में क्या परसेंटेज है बताओ? 27%. मैम 31%. 27% रहा 2011-12 में और 31% रहा 2017-18 में. ठीक है, तो 17 जो भी मेरे बुक में 27% ही है. कोई बात नहीं, देखो डेटा से ना कोई ये नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है. वो जो डेटा ओल्ड बुक होगा, तुम ईयर जो मेंशन करोगे ना उसका डेटा ईयर का डेटा रहेगा, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं. तो कहने का मतलब ये कि प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी में बहुत इंडिया के अंदर बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट था भी. मतलब जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत रहा है इंडिया में. तो अगर प्राइमरी सेक्टर से बहुत सारे लोग निकल के और सेकेंडरी और टर्शरी में चले जाते हैं तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्राइमरी में प्रोडक्शन उतना ही होगा प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ क्या है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. जहाँ 5 लोगों से काम चल जाएगा उस काम में 8-8 लोग लगे हुए हैं. तो इस तरह से तो धीरे धीरे प्राइमरी से लोग निकल करके और इंडस्ट्रीज में और या टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं. तो इसलिए टर्शरी सेक्टर में और ये सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ा है. ठीक है ना, तो घटेगा किसमें? प्राइमरी में. ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में घटने से कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि वहां तो पहले से ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था. समझ गए ना इस बात को? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं. ये तुम लोग पढ़े थे, where are most of the people employed? चलो आज यहीं से शुरू करते हैं. Yes, ma'am. फिर भी यहीं से शुरू करो आज, है ना. Graph 2 presents Okay, ma'am. percentage share of the 3 sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of sectors over the 40 years. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. पहले इस लाइन को देखो. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP, a similar shift has not been taken place in employment.
Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1972-73 and year 2011-12. The primary sector continues to be the largest employer even now. How? What the data reveals? If you compare, Now also primary sector is the largest employer. yes, Yes, ma'am. out that it has declined from 74% to 49% and further to 44%. But on the whole, if you compare the three, you will see that even now more share is in the primary sector for employment. And the second position is of secondary sector and the third position is of tertiary sector. Ma'am, second position of tertiary sector. Second position tertiary sector, right? Because it is 27%, and in the new data it is 31%. 31%. Okay. So now the first is primary, second is tertiary, and third is secondary. Regarding percentage of employment, industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times. इसको underline करो कि industrial sector में production 9 times बढ़ा, 9 times, underline this, 9 times. But the employment increased around 3 times. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है सेकेंडरी सेक्टर में उतना ही सेम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रेशियो कम है. Production 9 times बढ़ा और employment कितना बढ़ा? 3 times, went up around 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ा, मतलब सर्विसेज का वैल्यू 14 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना इंक्रीज हुआ? 5 टाइम्स. इंडस्ट्री का बताओ, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना टाइम्स बढ़ा? मैम 9 times. 9 times. और एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम्स बढ़ा? 3 3 times. times. और टर्शरी सेक्टर में कितना बढ़ा है? 14 times. 14 times. Unemployment 5 times. Employment rose to 5 Unemployment times 5 only. times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. So what is the position even now? In India, even now, more than half of the working population is working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. Half of the people, half of the working people are engaged in primary sector, but production is only quarter of the GDP. It means 1/4 of the total GDP. है ना? जो टोटल वैल्यू है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसका 1/4 कहाँ से आ रहा है? तो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना है? मोर देन हाफ, मोर देन 50%. लगभग 55% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में हैं इंडिया में. In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the people. अब देखो कितना contradiction है कि tertiary और secondary sector जो है वो कितना production कितना कर रहे हैं? 4/5, मतलब 5 हिस्से में से 4 हिस्सा किसको जाता है? secondary और tertiary को. लेकिन employment कितना दे रहे हैं? Less than half. Less than half. और उधर क्या है प्राइमरी में कि सिर्फ सिर्फ क्वार्टर प्रोडक्शन दे रहे हैं, और लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना है? 55%, मोर देन हाफ, है ना? उतने लोग उसमें एंगेज हैं. कहने का मतलब कि यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में. Does this mean that workers in agriculture are not producing as much as they would? तो देखो यहाँ एक टर्म मिलता है तो वो क्या? अंडर एम्प्लॉयड. मतलब एग्रीकल्चर में अगर जहाँ पे 5 persons रिक्वायर्ड हैं तो वहाँ फैमिली के 8 मेंबर्स लगे हुए हैं, उसी काम को उतने सारे लोगों में बटा हुआ है. कहने का मतलब ये, इफ
the 3 persons are sent out of the family to do other work in secondary or tertiary, then there will no effect on the production of that farm. Okay. So 5 persons are actually implied and 3 persons are extra in. So this is the general condition in our villages. And it is known as underemployment or disguised unemployment. अब यहाँ एक कहानी देखो, एक स्टोरी देख लो, उसका एग्जांपल दिया हुआ है. For instance, take the case of small farmer Lakshmi owing about 2 hectares of unirrigated land. Lakshmi is a poor farmer and the land is unirrigated. Okay. What will be grown in unirrigated land? It is difficult to grow rice in unirrigated land. So jowar, arhar are the crops which are grown, which can be grown in a low irrigation, no irrigation facility, only dependent on the rainfall. All 5 members of a family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. ठीक है ना, उसके फैमिली के 5 लोग इसी काम में, एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा काम है भी नहीं. They have nowhere else to go. You will see that everyone is working. None remains idle. But in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. ठीक है ना, मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्या कहते हैं इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पे उतने लोगों की जरूरत नहीं है. भले ही सब लोग उसी काम को बांट के कर रहे हैं, लेकिन इतने लोग, इसमें से कुछ लोग हटा भी दिए जाए तो प्रोडक्शन पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा. This is the situation of underemployment where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. Apparently working मतलब वो दिखाई दे रहा है कि वो सारे तो वर्किंग हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उनको सारे को उनका फुल पोटेंशियल के हिसाब से वर्क मिल नहीं रहा है. This kind of underemployment is hidden, in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड एक अलग कैटेगरी है जिसमें वो दिखाई देता है कि वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ क्या है कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सब के सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पूरे वर्कफोर्स का इस्तेमाल करने का वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है. 5 आदमी की जगह पे 8 आदमी काम कर रहे हैं, 8 आदमी की जगह पे 12 आदमी काम कर रहे हैं. काम करने को कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उनके फुल पोटेंशियल जो है लेबर का, उसका यूज नहीं हो रहा है. इसलिए इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है. डिस्गाइज्ड मतलब जो देखने में तो दिख रहा है कि हाँ ये लोग काम में लगे हुए हैं, बट एक्चुअली कुछ मेंबर्स अनएम्प्लॉयड हैं. Disguised unemployment के अंदर. Now supposing a landlord, Sukram, comes and hires 1 or 2 members of the family. ठीक है, उस लक्ष्मी की फैमिली में से ही 1 या 2 मेंबर को कोई लैंडलॉर्ड ले अपने फार्म लैंड में काम कराने के लिए. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages, since you do not need 5 people to look after that small plot. 2 people moving out does not affect production. ठीक है, यही एग्जांपल दिया हुआ है कि लक्ष्मी के यहाँ 5-5 लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जबकि उसके एग्रीकल्चर फील्ड में 3 ही लोगों की जरूरत थी. तो 2 अगर चले गए दूसरी जगह काम करने, सुखराम एक लैंडलॉर्ड है, उनके फील्ड में काम करने के लिए चले गए, तो इससे क्या फायदा होगा बताओ, तुम बताओ. लेबर और वो अपना घर का अर्निंग भी कर सकता है. और अर्निंग बढ़ जाएगी, घर की अर्निंग बढ़ यस जाएगी. मैम, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. हाँ, और अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अर्निंग बढ़ जाएगा. हाँ, यस मैम, उसके लक्ष्मी के फैमिली में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन वो भी दूर हो जाएगा. ठीक है, तो इस फैमिली की इनकम भी बढ़ जाएगी. तो ये इंडियन विलेजेस में ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग मतलब अंडर एम्प्लॉयड हैं या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है.
Two people moving out does not affect production on their farm. In the above example, two people may move to work in factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much for their land. वो अपने lands में जो production कर रहे थे वो भी कम नहीं होगा और बाहर से भी income आने लगे. दो member बाहर earn करने लगे तो वो भी income आने लगे. If we remove a lot of people from agriculture, अब पूरे कंट्री की बात करो कि if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. ठीक है ना? This is the real situation in India that so many people, lot of people are removed from their agriculture field. There is no bad impact on the production of the agriculture. Why? Because they are extra. They are underemployed. The income of the people also take up other work would increase the total family income. और इससे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि फैमिली की टोटल इनकम बढ़ जाएगी. तो ऐसा हो भी रहा है कि गांव से बहुत सारे लेबर फोर्स जो देखते ही हो तुम लोग अभी कोरोना टाइम में कितने हार्डशिप में भी लोग दोबारा से चले गए, है ना, दोबारा से चले गए अपने विलेजेस को छोड़ करके. इतने मुश्किल से लौटे थे और फिर निकल गए क्योंकि इतना अंडर एम्प्लॉयमेंट है विलेजेस में. तो ये दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बड़े बड़े एग्रीकल्चरल स्टेट्स जैसे है पंजाब हरियाणा, उधर ये लेबरर्स चले जाते हैं जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painter, plumber, repair persons and other doing odd jobs. यहाँ urban areas में देख रहे हो, village का तो हमने देख लिया कि village में agriculture में लोग काम करते हैं और यहाँ urban area में क्या क्या काम करते हैं, painters हैं, plumber हैं, repair के काम में लगे हुए हैं, कई तरह के काम कर रहे हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ऐसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं. बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही इंडिया का बहुत बड़ा है. Many of them don't find work every day. अब इसमें भी देखो कि किस तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरिया में, जो उनको रोज काम नहीं मिलता है ना. अगर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला पर्सन अगर दिन भर बाहर है और उसको बहुत कम ही ये मौका मिला पैसेंजर को ले जाने ले आने का और बाकी समय वो खाली बैठा रहा, तो वो क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल है. Similarly, we see other people of service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day, है ना. ठेला चलाने वाले, कुछ सामान सब्जी वब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, सारे दिन वहीं पे बैठे हुए हैं, काम ही में लगे हुए हैं, लेकिन उतना होल डे का काम उनको मिला नहीं. तो पूरे दिन में उनकी अर्निंग क्या होती है, बहुत लिटिल होती है. बट दे अर्न वेरी लिटिल, they earn very small amount. They are doing this work because they do not have better opportunities. अब उनको वही काम करना है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं. ठीक है. एक आंसर लिखना चाहोगे? देखो कितना टाइम बच रहा है. देखो I have lots of time. एक आंसर लिखा देना चाहते थे तुम लोगों को. Yes मैम यस बोलिए. मैम, डिक्टेट करा दीजिए. लिखो तो लिखना शुरू करो, क्वेश्चन दे रहे हैं. Yes मैम बोलिए. इसी बोल जो टर्शियरी सेक्टर है ना, जैसे दिखाते हैं. वेट
ये देखो, there has been, write a question, there has been, इकोनॉमिक्स के फेयर कॉपी में लिखो, आज का डेट लिख लो, there has been a big change in the three sectors of economic activities. In the three sectors of economic activities, comma, but a similar shift has not been taken place. Ma'am, repeat. But a similar shift has not been taken place in the share of employment. Full stop. फिर से सुनो, there has been a big change in the three sectors of economic activities, comma, but a similar shift has not been taken place in the share of employment. Full stop. Explain the above statement on the basis of facts. Explain the above statement on the basis of facts. One time please repeat, ma'am. Similar shift not be taken place. उसके बाद हाँ, एक और बच्चे ही सही रिपीट करवा देते हैं। कृष या अमन, कोई भी रीडिंग करो, जिसने क्वेश्चन पूरा लिखा है रीडिंग करो। शुभम कुमार, स्नेहा, एनी वन ऑफ यू? मैम कैन आई? वजाहत, तंजील, तुम लोग बोलते नहीं हो क्लास में। हाँ, रिपीट करो, जो रेडी है रिपीट करो जल्दी। There has been big change in the three sectors of Indian economy, but the similar shift has not been taken in the employment. Explain this with facts. हाँ, इसका क्वेश्चन का मतलब समझो पहले कि देयर हैज बीन अ चेंज इन द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, इसमें बहुत चेंज आया है। बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट बीन टेकन प्लेस इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उतना चेंज नहीं आया है, उसी रेशियो में, उसी के कंपैरिजन में इतना चेंज नहीं आया है। तो क्यों, है ना? इसको फैक्ट के बेसिस पे बताएंगे। तुम्हारे बुक में ये लिखा हुआ है अच्छी तरह से, तो आंसर को लिखो। Following are the facts. Following are the facts following are the facts of no similar change in the share of employment. Following are the facts for no similar change in the share of employment. Point number 1. Industrial output has increased by 8 times. Industrial output has increased by 8 times. But employment in the sector has increased only by employment in the sector. वही बात है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा तक बोल रहे हैं तो by 2 to 5 times. टैक्स कलेक्शन लेवल को उसका जितना उसका कमाई हो रहा है ना, सब उसका टैक्स में चल जा रहा होगा, उसके पास इन हैंड पे प्रॉफिट नहीं बचता होगा। हाँ, जैसे कि उतना स्कूल का बस चलेगा तो उतना पेट्रोल डीजल लेगा, फिर तो उसका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा ना। Who is speaking? और रोज रोज मतलब उतना आएगा तो उतना, ये सब का चक्कर में सब कर रहा था, लाइक टोल टैक्स बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा ना। बाद में करना ये डिस्कशन। तू कितना कितना कंप्लीट कर लिया है भाई? इंग्लिश का तो कंप्लीट कर लिए, और वो अनसन बकरे की लेटर कंप्लीट कर लेना जो लिखवाए थे, ऑल बॉल बकले कुछ हमको। तो उसका वो क्वेश्चन आंसर लिखता तो खाली बाहरी वाला जो चैप्टर के आखिरी में देता वो क्वेश्चन आंसर लिखता है कि वो इंडेक्स वाला सब भी लिखता है? जितना क्वेश्चन आंसर सब लिख दो। एक कोई में जो उधर मेन बुक है
मैम ये रश्मि मैम के बारे में बोल रहा था। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। अननेसेसरी बोलता है कोई तरीका नहीं है कि हाँ ऑनलाइन क्लास में क्या बिहेवियर होना चाहिए। जरूरी है क्लास में भी ऐसे ही करेंगे सब, जब ऑफलाइन क्लास होगा तो। हम ऐसे लोग मीटिंग आईडी शेयर करते Ma'am, हैं। can you repeat this point? हाँ हाँ Point number one, industrial output has increased by 8 times, but employment in the sectors has increased by 2 to 5 times. रिपीट वन टाइम। पहला पॉइंट समझ गए कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 टाइम बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसमें कितना बढ़ा है? ओनली 2 to 5 टाइम्स। तो एक ही गैप हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, इन द टर्शरी सेक्टर the production of services. Point number 2, in tertiary sector the production of services rose by 11 times, but employment in services rose only by 3 times. देखो अभी यहाँ कितना बड़ा गैप हो गया टर्शरी में कि 11 टाइम्स बढ़ा है उसका प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर का, मतलब टर्शरी सेक्टर का, और एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? सिर्फ 3 टाइम्स। पॉइंट नंबर थर्ड, more than half of the workers in the country are working in primary sector and producing only 1/4 of the goods. More than यानी वन। फिर से सुनो, more than half of the workers in the country are working in primary sector and producing only 1/4 of the goods. More than half मतलब लगभग हो गया आपको 55% लोग अभी भी एग्रीकल्चर या पूरे प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं और प्रोड्यूस ये एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? ओनली 1/4 of the goods. Point number 4, the secondary and tertiary sectors. Secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they only employ. मैम रिपीट प्लीज। Fourth point फिर से सुनो, the secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they only employ half of country's workers. Whereas they only employ half of country's workers. उत्कर्ष, ये फोर्थ पॉइंट रिपीट करो तो। मैम आई कैन। Secondary and tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they only employ half of the country. These workers, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है, the primary sector has disguised unemployment. The primary sector has disguised unemployment, whereas workers in secondary and tertiary sectors, work overtime.
हर्ष कुमार रिपीट करो सारे पॉइंट्स को। अच्छा, अमन कृष्ण, अनुप्रिया, कोई भी सारे पॉइंट रिपीट करो, टाइम खत्म हो रहा है, अब मेरे पास 4 मिनट समय है। Industries output are increased 8 times, but employment in the sectors 2 to 5 times in tertiary sectors. Second point, in the tertiary sectors, the producing service grows in 11 times, but the employment in the grows in 3 times. यहाँ करेक्शन कर लो, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज रोज बाय 11 टाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज रोज बाय 11 टाइम्स, ठीक है, बाकी ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलो। मोर देन हाफ ऑफ द वर्क। मैम थर्ड पॉइंट मेरा मतलब सही नहीं लग रहा है मैम, एक बार रिपीट करवा दीजिए ना किसी से। कराएंगे तो बोलो। More than half of workers in the country are working in primary sector and producing only 1/4 of the goods. इसको रिपीट करो अनुप्रिया, थर्ड पॉइंट। Ma'am, more than half of the workers in the country are working in the primary sector and producing only 1/4 of the goods. वेरी गुड। चलिए फोर्थ पॉइंट कौन रीडिंग करेगा, जल्दी बोलो। Secondary and tertiary produce 3/4 of the produce. They only employed half of the country workers. सही है। और फिफ्थ पॉइंट। The primary sector discussed unemployment, where as the workers of the secondary and tertiary sectors work overtime. ऐसा है कि नहीं, तुम लोग महसूस करते हो ना कि जैसे विलेजेस में, रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। वही एग्जांपल कि जहाँ 5 लोगों की जरूरत है वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जबकि यहाँ अर्बन एरियाज में देखो तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि 8 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है।